So recently we posted a video where I said that we have created a company from 0 to 2 crores. And इसके बाद मेरे पास बहुत सारे friends के बहुत सारे colleagues के फ़ोन आए that they are very proud what I've did. And plus उसमें लोगों ने मेरे को बहुत sympathy भी दिखाई कि I was in ICU struggling through heart attack. And वो मुझे समझ में आया कि probably the message has gone wrong to people. ज़ीरो से शुरू करने का मतलब ये नहीं था दैट आई वॉज ब्रोक एंड सिंपैथी इसलिए नहीं चाहिए थी बिकॉज इट वॉज बाउंड टू हैपन. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल द एंटायर थिंग दैट व्हाट हैज़ हैपेंड, हाउ आई बिल्ड 2 करोड़ का कंपनी. एंड अब तो 2 करोड़ रह नहीं गया. वी आर वर्किंग डे इन डे आउट एंड इट हैज़ ऑन अ लेवल वेयर वी विल एंडिंग दिस ईयर बाय समवेयर अराउंड 5 to 6 करोड़. सो या आई थिंक लाइफ में ज़रूरी ये होता है समझ पाना कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको क्या आता है और आपके पास कितनी बैंडविड्थ है क्या करने की. सो ज़ीरो से शुरू करने का मेरा मतलब ये नहीं था दैट आई वाज स्ट्रगलिंग टू हैव अ फूड फॉर अ डे. आई हैड एन एक्साइटिंग करियर. मैंने होटल्स में काम किया. मैंने रेडिसन, हायट, मैरियट, I've set up revenue management from Saji Group to Mayfair. I've done a lot in my career and I was earning pretty good amount. But पिछले करीब कोविड जब आया, हॉस्पिटैलिटी को बहुत डेंट लगा. उस समय पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था बिकॉज जॉब हॉस्पिटैलिटी में थी नहीं एंड मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा था. सो आई केम आउट विद माई फ्रेंड एंड वन ऑफ माई colleague Kunal and we went out and created a company called as Play Hotel. Play Hotel was initially we were focusing to have hotel and हमने मैनेजमेंट कुछ होटल लिए, 5-6 होटल कर लिए and it was also a dream that we wanted to do something of our own self. So अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो बहुत सारे changes लगते हैं when it comes for you to come out of a job and do a business. 2 चीज़ें जो मैंने अपने अंदर बदली थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. One is mindset, another one is knowing how far that you can go. I truly believe किसी को भी नहीं पता what you are capable of unless you are in search or hunt of to know exactly what you're capable of. I come from no hospitality background, so I am a computer science graduate. और मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था दैट मैं कभी होटल में काम भी करूँगा बिकॉज दूर दूर तक कोई रिश्ता था ही नहीं उसका. आई वॉज डूइंग अ जॉब इन मेट्रो, एवरीथिंग वॉज गुड, इट वॉज गोइंग गुड. मैं 21-22 का था एंड जैसे हर किसी को लगता है एट दिस एज थिंग्स विल फॉल इन गुड फॉर मी. बट पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब बोलो या फिर गॉड हैज़ लेड डाउन अ पार्ट जहाँ पे मैं सीखूँगा ये सारी चीज़ें विद ऑल दी प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू फेस. मेट्रो बंद होने पे आ गई बिकॉज इट वॉज गोइंग इन टू द हैंड ऑफ DMRC. अर्लियर इट वॉज विद रिलायंस एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब. आई लैंडेड टू कंपनी कॉल्ड एज प्रैक्टिस सर्विस. अगेन दैट वॉज अ डिसीजन दैट आई टुक कि ओके फाइन लेट्स वर्क ऑन इट. एंड वो कंपनी बेसिकली एक स्टार्टअप थी एंड इट वॉज लेड बाय मिस्टर रवि सरू. एंड मिस्टर रवि सरू वॉज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स एंड आई डिडंट न्यू कि ये कौन है, क्या करते हैं और होटल में क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था. एग्जैक्टली बोलूँ तो मुझे ये भी नहीं मालूम था रूम टैरिफ क्या होता है, CP, AP, MAP क्या होता है. एंड ही गेव मी द जॉब. ही ट्रेन मी फॉर 2.5 years एंड आई वॉज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू लर्न दिस बिकॉज जिस दिन मुझे समझ में आया कि दिस गाय एट दिस लेवल इज ट्रेनिंग मी, मैंने अपने मन में ये सोचा कि अगर मैं IIM करने जाता तो मुझे लोग सिखाते, टीचर्स सिखाते, मैं एग्ज़ाम देता, पास होता, पर उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते. यहाँ पे एक इंडस्ट्री जीनियस आपको पढ़ा रहा है जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं. सो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं अपने 100% दूँ. सो आई गेव माई 2.5 years एंड यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. 2.5 साल के बाद माई करियर इन होटल हैज़ स्टार्टेड और वहाँ से फिर मैंने पलट के देखा नहीं टिल द टाइम कोविड केम इन. एंड देन कोविड आया तो मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो ख़त्म हुई बिकॉज आई हैड द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन आई हैड टू सर्वाइव माई ओन सेल्फ. एंड फिर हमने कंपनी बनाई. जब कंपनी बनाते हैं आप तो शुरुआत में कोई पैसे नहीं आते, तो सबको पता है स्टार्टअप करते समय. सो ऑल माई सेविंग्स आर गॉन इन एंड देन सडनली बिजनेस चल पड़ा तो पैसे आने लगे. प्ले होटल वॉज डूइंग नाइस एंड गुड
बट जब पैसे आते हैं तो प्रॉब्लम भी लेके आते हैं। एंड एज आई सेड, mindset is something that everyone has to change. So I'll go back to think, when I joined Sayaji, it was the last job that I did. When I joined Sayaji, I joined as a corporate revenue head. And one thing which was always in my head, that as an hotelier, I cannot have a tattoo. I cannot keep a beard. So there was a personality that you have to carry when you are a hotelier. At my time when I was working. And the day I joined Sayaji, मुझे याद है 2-3 महीने बाद I started growing my beard. I said, enough of the personality that I have to carry. I want a personality that I want to carry my own self. It is not a personality that will be forced by industry to me. And then when I was CRO, there was no client interaction, there was no guest interaction. I was sitting at back end doing a lot of things for the hotel. So yeah, beard came in, and yeah, this tattoo came in. And these two things have actually changed me and my mindset that yeah, I can do this because I wanted it. And then suddenly the realization has started coming in that I want to do something and I'm capable enough to do something. And then the chance came in, COVID, play hotel बना, चला, पैसे आए, and उसके बाद problems आई. So I said जहाँ पैसे आते हैं वहाँ problem आती है. So it was some vision clashes between me and my partner, and I said okay fine, I have to find my way. I was very clear that I built a mentality, I can build something for my own self. So I formed the company in Feb because January से मुझे समझ में आ चुका था that this is not gonna work out. And June तक आते आते things have came to that level that I have to exit Play Hotel. It was 2 June, जैसा मैंने बोला था. 2nd June को I surrendered my shares, I resigned as CRO. And then at the same time, because there was nothing else that I was doing rather than building Play Hotel, so it was my 100% effort. A lot of sweat and blood has gone in. Just to give you an idea about things that I worked during the COVID, when people were in their home, praying for life, safe रहना है. मैं ट्रेन में, बसेस में, कार्स में ट्रैवल कर रहा था for different location to get the hotels. And that day when everything ended for me, मुझे उस समय सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि ये 2 साल का टाइम वापस कैसे आएगा. And then I realized that time never comes back. You have to buy the time. Said okay. And at the same day when I was at home, रात के करीब 2:30 बजे, I got a cardiac arrest. And कभी लगा ही नहीं था यार कि हार्ट अटैक आएगा. So I was in denial. सुबह 7:30 बजे तक कि हार्ट अटैक नहीं है, ये गैस है probably. And in the morning I went to hospital. I was rushed to ICU because I was almost near to death. Survived, been in ICU for 7 days. But again I said there is no sympathy that I'm looking at because zero तो था पर बहुत experience था. बहुत साल नौकरी कर चुका था. I knew my skill. एक कंपनी बना चुका था, उसको सक्सेसफुल कर चुका था, और सक्सेसफुल होने की वजह से ही मुझे बाहर जाना पड़ा था. एंड दिस ऑल गेव मी थिंक दैट इफ आई हैव सर्वाइव्ड, व्हाई नॉट लिव नाउ एंड नो मोर सर्वाइवल एनीमोर. सो करीब 10-15 किलो वजन कम हो गया था आईसीयू से आते ही. सो आई हैव टू गो बैक, रश बैक टू होम. आई वॉज डूइंग अ बेड रेस्ट. And at this entire 1 month of time, I was closing clients for Retvens service. So we do revenue management and marketing for a lot of hotels. And this entire 1 year has gone like magic. पता ही नहीं चला कब क्या हुआ. And suddenly we started realizing that we have built an entire company on this entire skill that we have carried. And this company was not built just because there were 4 people working. We had 4 directors who were working with me. We have built team, new offices, and everything that has happened is only because we never said that we will give up. All the problem, let it be. Solve करते जाएंगे. मुझे याद है कि मुझसे लोगों ने बोला था that ये चीज़ कंपनी नहीं बन सकती. And I said I have done enough study. I know what I'm doing and I will build it. So ये बनने के बाद हमने इसको चलाया, प्रॉफिटेबल बनाया. आज हम करीब इस कंपनी से बहुत सारी चीज़ें और बूटस्ट्रैप कर रहे हैं विद इन दी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट. इट विल कम आउट सून. इन सारी चीज़ों में मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि
मेहनत एक चीज़ है और माइंडसेट एक चीज़ है. सो बीइंग एन एम्प्लॉय टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आप बोलो एक बिजनेस को चलाने में, the stress level is twice and thrice what you have in job. The problems that you face on daily basis are way bigger than what you face in your job, and payouts are not always very great, but you have to keep working hard, keep believing in yourself. This is what it takes. मुझे हर कोई बोलता था कि रिस्क लो, लाइफ में बड़े हो जाओगे, पर किसी ने कभी नहीं बताया कि रिस्क लेते कैसे हैं. एंड आई रियलाइज दिस दैट देयर इज़ नो मैथ, देयर इज़ नो कैलकुलेशन दैट कैन टेल यू दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन टेक रिस्क. आई वॉज 33, 34. आई वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर. आई हैड टू लुक आफ्टर द फैमिली. जब भी रिस्क लेने की बात आती है, सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं. ये डर कि अगर अगले महीने सैलरी नहीं आई तो ये सब कैसे चलेगा. And at that level, when you have a lifestyle to maintain, it gets very difficult. And then I realized that आज अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं आगे कब लूँगा. To calculate the risk, मैंने सोचा कि आज मुझे 6 महीने सैलरी नहीं मिली तो क्या जाएगा मेरा. How much that I have to suffer, how much my family has to suffer. I sat down, calculated all of this, and I said, okay, fine, I have 3 months left with me, where I have to work hard and generate at least this much amount that I can survive. And that was the survival mode for me. And after 3 months, when the survival was over, we said, no, we want to make it big, and we continued. We opened office in Saudi Arabia, we opened office in Oman, we are opening office in Europe. All of this happened only because we said that this thing has to work out. Other than this, I think बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पे हमें ये लगा कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट, बिकॉज एक सर्विस इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए हर महीने कुछ क्लाइंट चाहिए होते हैं और आपको कभी नहीं पता होता वो क्लाइंट कैसे आएंगे. देन वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेइंग कि क्लाइंट लाना साइंस है एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस कि क्लाइंट्स कैसे आएंगे. एंड व्हेन द क्लाइंट्स केम इन, उनको रिटेन करना, उनको एक अच्छी सर्विस देना, उसके लिए आपके पास अच्छे लोग, प्रोसेस, एवरीथिंग, सब कुछ प्लेस में होना चाहिए. व्हेन यू आर न्यू, यू आर स्टार्टअप, नो गुड पीपल कम एंड जॉइन यू. अनलेस यू बिकम बिग, एवरीवन वांट टू कम ऑन योर बोट एंड हैव अ लाइफ दैट यू वांट टू डिलीवर टू देम. बट शुरुआत में जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपके पास लोग ही नहीं आते हैं. एंड देन आई रियलाइज आई वॉज नथिंग एंड समवन ट्रेन्ड मी टू बिकम व्हाट आई एम टुडे. Why not go out and train other people? Because this is what I have learned. So we got people who have no hotel background. We trained them, and we have actually given them a lot of knowledge, experience. We shared all of this, and they are the people who are driving everything. So मुझे एक चीज़ समझ में आई कि the restriction is in your head. The solution is always there. We don't actually go out and find solutions. We keep on thinking on the problems, and we always go out and think that solution has to come on the traditional way, जैसे सबके लिए आ रहा है. नहीं, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए. आपने यहाँ तक सर्वाइव कैसे किया, what has worked out for you, it will again gonna work out for you. एक पुरानी कहावत है हिस्ट्री में, history repeats itself. So if you go back and just look at your own history, you can repeat it again. Because if I can get trained and become a CRO of Sajik, I can work in Marriott and Hyatt anywhere. Whereas मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे होटल में नौकरी भी मिलेगी या मैं काम भी करूँगा होटल में. This was not a career path for me. Now I actually look at hospitality industry as जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं इसी इंडस्ट्री में काम करूँगा. And everything that I'm going to build, so I'm doing a lot of tech. I am working on community app. I am working on revenue management and marketing. Everything that hospitality need, I'm going to solve all of this. Why? Because I love this industry. Because I've given a lot of time. Because I've given a lot of effort. Why to leave? So that's how you build your career and all together. And if you have a skill and you have mastered those skills and you have believe in yourself, I think you should go out and take risk on those ground where you are best. Because risk लेते कैसे हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता है, आप किस चीज़ पे कॉन्फिडेंट रखते हो. अगर आपको पता है योर स्किल इज बेटर, मेक इट बेस्ट एंड देन गो आउट. एंड इफ यू डोंट हैव स्किल, डेवलप वन. अदरवाइज कंपनी बनाना आसान नहीं है. Anyone and everyone who is trying to go out and build a company, trust me, you are going to face problem that you would have never imagined in your life.
I have seen nights where I was not able to sleep. I have seen days where we hardly had money to give for our lunches. But everything has gone away just because we never said, that's it, let's pack our bag. No, we said, we will not give up, we'll continue working. And all 4 persons who were working with me, they have stood by us. We stand strong as a company and said, no, we are building something, we will not quit. And today, ये 2 करोड़ की कंपनी बनी, अब ये और बढ़ती जा रही है. सो लास्ट मैं 2 करोड़ पे बैठा था, आज मैं करीब 3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास बैठा हुआ. एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ईयर somewhere around 6 to 7 crore rupees. And I think we are also learning with time. We are also growing big. We are going to take new office. More people are going to join. And now we don't have problem people joining us. Earlier it was. So all of these problems suddenly have started fading away. So I can tell you this, that it is a test of time for you. If you're building something, have patience, but don't have too much of patience as well. So run fast, calculate your risk, work on it. Anyone can go out and make a company on their skill if they know how to transfer those skills to people, make them learn, and you can build a company too. So yeah, I think my purpose to come out and tell this story about how and what I am doing is that I want to tell everyone out there, if you are lacking in motivation to go out and start your own thing, here it is. I've done this, coming from nowhere. I'm from Kanpur, a small city in Uttar Pradesh. Knew nothing about hospitality and built an empire out of it. And I'm still building. I have not said no to this thing. I'm not quitting right now. I have just started. So all of this reminds me of one thing. If you change your mindset, if you have a skill and you're ready to take risk and you calculate how to take risk, you are done. You have made it. आप कंपनी बना सकते हो, आप उसको बड़ा कर सकते हो, आप जहाँ तक जाना चाहते हो जा सकते हो.